Hello friends, my name is Mudassir Manzoor and I welcome you all in this new initiative of Target Computer Awareness that is going to help you in banking, SSC, GK, SSB, UGC NET, police, railway and other state level recruitment exams. And here you can see some special features of this series. It include chapter wise discussion in notes forum, chapter wise question bank with each chapter, chapter wise collection of previous year questions including with 5 practice sets. So this is going to be most important section for you people that will help you in bank, PO, clerk, SSC, GK, SSB, UGC NET, police, railway and in other state level exams. And through this entire series we are going to cover almost all the syllabus. और मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि रिवाइज करें each chapter, each part at least twice and they can also practice MCQs, PYQs as well before their examination. इसके अलावा मैं आपको ऑल्सो बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड फॉर PDF यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। अदरवाइज़ अगर आपको कोई क्वायरी डाउट या अगर आपको स्टडी मटेरियल ज़रूरत हो देन आप मुझे ऑल्सो मेल कर सकते हैं ऑन दिस ईमेल। और हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं MCQ set 1 and 2 of this chapter in which we had discussed at least 40 questions that are important from your exam point of view। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा, वीडियोस आर अवेलेबल देयर, आप जाके उन वीडियोस को ऑल्सो देख सकते हैं। And today this will be our third MCQ PYQ set of this chapter. So let's start with the question number 41. The question is the dash dash which contains billions of documents called web pages is one of the more popular services on the internet. I think this is an easy question and this question had been already asked in SBI Clerk 2014. Your options are 1 web server, 2 telnet, 3 web, 4 collection and 5 none of these. Here the correct answer is option 3 web. Let's see an explanation. वेब और वर्ल्ड वाइड वेब जो है इट इज़ अ सर्विस दैट इज़ अवेलेबल ऑन द इंटरनेट एंड इट कंटेन्स बिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट वी कॉल्ड एज वेब पेजेस। और ये जो वेब पेजेस हैं दीज आर इंटरकनेक्टेड थ्रू हाइपरलिंक्स और इनको एक्सेस किया जा सकता है थ्रू वेब ब्राउजर्स। है ना, जो हमारा ऑप्शन 3 है दैट इज़ अवर करेक्ट आंसर। नाउ लेट अस डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज व्हाट इज़ URL? I think this is also an easy question and it has been already asked in IBPS Clerk 2012. Your options are 1 a computer software program, 2 a type of programming object, 3 the address of a document or page on the World Wide Web, 4 an acronym for unlimited resource for learning and 5 a piece of hardware. Here the correct answer is option 3 the address of a document or page on the World Wide Web. Explanation. As you know, URL जो है stands for Uniform Resource Locator and it is an address of a resource on the internet which basically tells where the resource is located, that is domain name and IP and also how to get these resources, that is protocol. So जब हम टाइप करते हैं कोई भी URL in browser, it basically guides the browser to the right server and receives the correct resource. And so हमारा option 3 है that is our correct answer. Now let us move to next question. The question is which of the following is used by the browser to connect to the location of the internet resources? As just we had discussed, this is also an easy question and this question had been already asked in IBPS Clerk 2011. Your options are 1 linkers, 2 protocol, 3 cable, 4 URL and 5 none of these. Here the correct answer is option 4 URL. Let's see an explanation. URL, that is Uniform Resource Locator. It is an address of the resource on the internet. Like जब हम टाइप करते हैं कोई URL in web browser, जो browser है that use this address to locate and to connect to the specific server where requested internet resource जो है that is stored. ठीक है। Let's also talk about other options like option 1 linkers जो है it is incorrect because जो linkers हैं these are the programs that are used in the software development to combine object code files into a single executable program and they are not directly involved in web browsing.
देन ऑप्शन 2 प्रोटोकॉल जो है इज ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज जो प्रोटोकॉल्स हैं दीज आर दिस सेट ऑफ रूल्स जो कि गवर्न करते हैं कम्युनिकेशन बिटवीन द डिवाइसेस एंड प्रोटोकॉल्स जो है लाइक HTTP एंड HTTPS इनको स्पेसिफिकली यूज़ किया जाता है ड्यूरिंग द कनेक्शन प्रोसेस. सो URL जो है इट बेसिकली specifies where and what to access, while जो प्रोटोकॉल है it is about how communication happiness. So protocol जो है it is just one component of URL rather than the whole definition. Then option 3 cable जो है it is also incorrect because जो cable है it is a physical medium used for transmitting data and ये जो physical connection है ये हमें necessary देखने को मिलता है for the internet access and जो cable है it itself does not tell the browser where to find the specific resources. And option 5 none of these जो है it is also incorrect because जो URL है service best for this purpose. Hence जो हमारा option 4 है that is our correct answer. Now let us discuss next question. The question is an absolute dash dash contains the complete address of file on the internet. As just we had discussed, this is also an easy question. This question had been already asked in SSC CGL 2017 and UPPSC Computer Assistant 2019. Your options are 1 JavaScript, 2 URL, 3 SQL and 4 string. Here the correct answer is option 2 URL. Let's see an explanation. एक absolute URL जो है that basically gives full precise addresses of the resources. So that जो browsers है that exactly knows where to go no matter where the request is made from. And ये जो URL है it specifies its complete structure like जो protocols हैं like HTTP, HTTPS, host name or domain name like .com, .org, port number and also the path or exact location of the files or resources. So this is how जो URL है it provides a direct and unambiguous way to locate the resources. Hence जो हमारा option 2 है that is our correct answer. Now let us discuss the next question. The question is which of the following must be contained in URL? This question had been already asked in IBPS PO 2012. Your options are 1 a protocol identifier, 2 the letters www, 3 the unique registered domain name, 4 www and the unique registered domain name, and 5 a protocol identifier www and unique registered domain name. Here the correct answer is option 1 that is protocol identifier and also option 3 that is the unique registered domain name. Explanation. In strict technical terms for a complete URL both protocol identifier and जो domain name है these are required. So URL जो है that must contain protocol identifier which basically tells the browser how to communicate with the server and इसके जो examples हैं that are HTTP, HTTPS and FTP and also the unique registered domain name जो कि पॉइंट करते हैं ब्राउज़र को टू द एग्जैक्ट वेबसाइट और सर्वर जहाँ रिसोर्स जो है दैट इज़ होस्टेड एंड इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं दैट आर .com, .org एक्स्ट्रा. While जो www है it is just a subdomain which is not mandatory part of URL and website जो है that also works without www, so it's not a mandatory component. Hence both option 1 and 3 जो है that are our correct answers. Now let us discuss next question. The question is URL identifies the location of specific web page on the internet. Here URL stands for, I think this is an easy question. Your options are 1 uniform read locator, 2 uniform resource locator, 3 Unicode resource location, 4 united resource locator and 5 none of the above. Here the correct answer is option 2 uniform resource locator. Explanation. URL जो है stands for uniform resource locator and it is basically an address of something on the internet which basically tells where the resource is located and how to receive it. So जो URL है it is URL जो है it is what we type into browser to reach a specific website page or file. Hence जो हमारा option 2 है that is our correct answer.
Now let us see next question. The question is, which among the following terms means refers to web address of a page? As just we had talked about it, I think this is also an easy question. Your options are 1 SMTP, 2 IP, 3 HTTP, 4 URL, and 5 MAC. Here the correct answer is option 4 URL. Explanation: जो URL है it is a web address of a page or other resources that are located on the internet जो कि प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन जो कि है हमें नेसेसरी देखने को मिलता है फॉर ब्राउजर्स टू लोकेट and to receive this specific resource. Let's also talk about other options like option 1 SMTP जो है that is simple mail transfer protocol. It is incorrect because जो protocol है इसको specifically use किया जाता है to send emails. Then option 2 IP that is internet protocol. It is also incorrect because जो IP है ये जो protocol है it basically defines the format of packets that are to be sent over on the internet, and it also provides the IP addresses for the devices. Then option 3 HTTP जो है that is hypertext transfer protocol is also incorrect because ये जो protocol है इसको specifically use किया जाता है for transferring files or web pages on the world wide web. And option 5 MAC जो है that is media access control. It is also incorrect because जो MAC address है it is a unique hardware address that is given to each network interface controller NIC for communication within a network segment. Hence जो हमारा option 4 है that is our correct answer. Now let us discuss another question. The question is, the last 3 letters of the domain name describes the type of. This question had been already asked in SSC FCI 2012 and this is also an easy question. Your options are 1 organization domain name, 2 connectivity, 3 server, and 4 protocol. Here the correct answer is option 1 organization or domain name. Let's see an explanation. जो लास्ट 3 लेटर्स होते हैं डोमेन नेम के दैट वी आल्सो नोन एज टॉप लेवल डोमेन और डोमेन सफिक्स जो कि बेसिकली डिस्क्राइब करते हैं टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द जियोग्राफिकल ओरिजिन ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. लाइक फॉर एग्जांपल .com जो है इसको यूज़ किया जाता है फॉर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन. सिमिलरली .org जो है इसको यूज़ किया जाता है फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस. सिमिलरली .gov जो है इसको यूज़ किया जाता है फॉर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस. .edu जो है इसको यूज़ किया जाता है फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. .net जो है इसको यूज़ किया जाता है फॉर नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशंस. .nic जो है इसको यूज़ किया जाता है फॉर कंट्री इंडिया. .us जो है इसको यूज़ किया जाता है फॉर द कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स एक्सेट्रा. So you जो suffixes हैं at the end of the domain name these are called as top level domains TLDS, and इनका जो primary purpose है that is to categorize the type of organizations and to identify the country associated with particular domain name. Hence जो हमारा option 1 है that is our correct answer. Now let us move to next question. The question is, an educational institution would generally have the following in its domain name. I think this is an easy question as we had talked about it, and this question had been already asked in IBPS Cleric 2012. Your options are 1.org, 2.edu, 3.inst, 4.com, and 5.sich. Here the correct answer is option 2.edu. Let's see an explanation. टॉप लेवल डोमेन .edu जो है इसको स्पेसिफिकली यूज़ किया जाता है फॉर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस स्पेशली इन द यूनाइटेड स्टेट्स. हाउएवर कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है इन अदर कंट्रीज दे आल्सो यूज़ देयर कंट्रीज स्पेसिफिक डोमेन नेम विथ अ टॉप लेवल डोमेन लाइक .edu.uk. ठीक है, हैंस जो हमारा ऑप्शन 2 है दैट इज़ आवर करेक्ट आंसर. नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज, specialized programs that assist users in locating information on the web are called. This question had been already asked in RBI Grade B 2012. Your options are 1 information engines, 2 locator engines, 3 web browsers, 4 resource locators, and 5 search engines. Here the correct answer is option 5 search engines. Explanation.
जो सर्च इंजन्स हैं दीज आर द सॉफ्टवेयर सिस्टम्स जो कि हेल्प करते हैं यूजर्स को टू फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, दैट इज थ्रू क्राउलिंग, इंडेक्सिंग एंड थ्रू रिट्रीविंग रिजल्ट्स। एंड जो एग्जाम्पल्स हैं सर्च इंजन के दैट इंक्लूड्स गूगल, बीइंग, डक गो एट्सेट्रा। ठीक है, लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट वाई अदर ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। लाइक ऑप्शन 1 इंफॉर्मेशन इंजन्स जो है इट इज़ इनकरेक्ट बिकॉज इट इज़ नॉट ए स्टैंडर्ड टर्म यूज्ड फॉर दिस पर्पस। Then option 2 locator engines जो है it is also incorrect because it is not also a standard term used in this context. Then option 3 web browsers जो है it is also incorrect because you know जो web browsers हैं these are the software applications जिनको use किया जाता है to view web pages और they also uh, allow users to interact with the search engines but they are not the programs that perform search. देन ऑप्शन 4 रिसोर्स लोकेटर जो है इट इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज जो रिसोर्स लोकेटर है इट इज़ ए ब्रॉडर टर्म विच इंक्लूड URL जो कि लोकेट करते हैं स्पेसिफिक रिसोर्सेज को ऑन द इंटरनेट एंड दिस इज़ नॉट ऑल्सो एनी काइंड ऑफ प्रोग्राम दैट हेल्प यूजर्स टू लोकेट इन्फॉर्मेशन थ्रू सर्चिंग। है ना, जो हमारा ऑप्शन 5 है दैट इज़ अवर करेक्ट आंसर। Now let us proceed to next question. The question is, which among the following is a search engine? As just we had discussed, I think this is an easy question. Your options are 1 Internet Explorer, 2 Flash, 3 Google and 4 Firefox. Here the correct answer is option 3 Google. Explanation, you know जो Google है इट्स वेब सर्च इंजन जो कि अलाउ करते हैं यूजर्स को टू सर्च फॉर एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। ठीक है, लेट्स ऑल्सो सी वाई अदर ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। लाइक ऑप्शन 1 इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है इट इज़ इनकरेक्ट बिकॉज जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है इट इज़ वेब ब्राउज़र जिसको डेवलप किया है बाई माइक्रोसॉफ्ट, जिसको स्पेसिफिकली यूज़ किया जाता है टू वेब टू व्यू वेब पेज एंड इट इज़ नॉट ए सर्च इंजन बट इसको ऑल्सो यूज़ किया जा सकता है टू एक्सेस सर्च इंजन्स। देन ऑप्शन 2 फ्लैश जो है इट इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज जो फ्लैश है इट इज़ बेसिकली ए मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म जिसको यूज़ किया जाता है फॉर क्रिएटिंग एनिमेशंस, गेम्स एंड अदर वेब एप्लीकेशंस विच इज़ नॉट ऑल्सो ए सर्च इंजन। देन ऑप्शन 4 फायरफॉक्स जो है इट इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज जो फायरफॉक्स है इट इज़ अ वेब ब्राउज़र लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर जिसको ऑल्सो यूज़ किया जाता है टू वेब पेजेस टू व्यू वेब पेजेस एंड इट्स नॉट ऑल्सो ए सर्च इंजन बट इसको ऑल्सो यूज़ किया जा सकता है टू एक्सेस सर्च इंजन्स। Hence, जो हमारा ऑप्शन 3 है that is our correct answer. Now let us see next question. The question is, a dash dash is the term used when a search engine returns a web page that matches the search criteria. This question had been already asked in IBPS PO 2011. Your options are 1 blog, 2 hit, 3 link, 4 view and 5 success. Here the correct answer is option 2 hit. लेट्स सी एन एक्सप्लेनेशन। जब हम टाइप करते हैं कोई भी क्वेरी इन ए सर्च इंजन, जो सर्च इंजन है दैट बेसिकली लुक्स थ्रू इट्स इंडेक्स मीन्स एवरी पेज जो होता है हियर दैट बेसिकली मैचेस आवर सर्च क्राइटेरिया दैट इज बेसिकली काउंटेड एज हिट। लाइक फॉर एग्जांपल जब हम सर्च करते हैं फॉर डिजिटल मार्केटिंग बेसिक्स, जो सर्च इंजन है इट फाइंड्स 10 मैचिंग वेब पेजेस दैट मीन्स इट प्रोड्यूस 10 हिट्स। सो हिट जो है इट इज़ 1 मैचिंग रिजल्ट इन ए सर्च इंजन आउटपुट है ना, जो हमारा ऑप्शन 2 है दैट इज अवर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज प्रोजेक्ट लून is a search engine project by dash dash by providing internet access to rural and remote areas using high altitude helium filled balloons. This question had been already asked in RRB and DPC 2016. Your options are 1 A Google, B Microsoft, C Apple and D Yahoo. You have to choose your correct answer from the given codes below. These are 1D, 2C, 3B and 4A. Here the correct answer is option 4A, that is Google. Let's see an explanation. Search engine project for providing internet access to rural and remote areas by using high altitude helium filled balloons. It is called as Project Loon and ये जो project है it is a project of Alphabet parent company of Google
Hence जो हमारा ऑप्शन 4 है that is our correct answer. Now let's move to next question. The question is, which of the following is always a part of email address? This is also an easy question. Your options are 1 period, 2 at rate, 3 space, 4 underscore, and 5 angular bracket. Here the correct answer is option 2 at rate. Let's see an explanation. एट रेट सिंबल जो है इट इज़ द कैरेक्टर जो कि सेपरेट करता है यूज़र नेम को फ्रॉम द डोमेन नेम इन ईमेल एड्रेस लाइक दिस. सो एट रेट सिंबल जो है यह हमें एसेंशियल देखने को मिलता है. ठीक है. लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट अदर ऑप्शंस लाइक ऑप्शन 1 पीरियड जो है इट्स इनकरेक्ट बिकॉज जो पीरियड है इट्स ऑफन यूज्ड विद इन द यूज़र नेम और डोमेन नेम लाइक दिस बट दे आर नॉट मैंडेटरी. देन ऑप्शन 3 स्पेस जो है इट इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज spaces जो है they are not allowed in email addressing. Then option 4 underscore जो है it's also incorrect because जो underscores है these are used in the username part of email address like this but they are not necessary. And option 5 angular brackets जो है it's also incorrect because जो angular brackets हैं इनको sometimes use किया जाता है to close the email address when it appears along with the name like this. But they are not basically the part of email address itself. Hence जो हमारा option 2 है that is our correct answer. Now let us discuss last question of this session. The question is, which of the following is not an email service provider? Your options are 1 Hotmail, 2 Gmail, 3 Bing, 4 Yahoo Mail, and 5 Outlook. I think this is an easy question. Here the correct answer is option 3 Bing. Let's see an explanation. Hotmail, Gmail, Yahoo Mail and Outlook. These are all the examples of email service providers जो कि एक्ट करते हैं एज ए प्लेटफॉर्म्स जो कि अलाउ करते हैं यूजर्स को टू क्रिएट ईमेल अकाउंट्स, सेंड एंड रिसीव ईमेल्स एंड टू मैनेज देयर ईमेल बॉक्सेस. while on the other hand जो Bing है it is a search engine जिसको डेवलप किया है by the Microsoft and it is one of the popular internet service and इसकी जो प्राइमरी फंक्शन है दैट इज़ टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द वेब रादर देन टू प्रोवाइड ईमेल सर्विस. हैंस जो हमारा ऑप्शन 3 है दैट इज़ अवर करेक्ट आंसर. सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा. अगर कहीं पे डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर लिखें या आप मुझे मेल कर सकते हैं ऑन दिस ईमेल. एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड फॉर PDF you can join the Telegram group. So that's it for today. I hope you find this video informative. Don't forget to share, like and subscribe to Discipline Talk channel. Thank you for watching.